Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to lecture 6 of the course of CS352 Introduction to Soft Computing. This lecture is all about adversarial search techniques, a specific type of techniques in AI where two or more players are competing against each other. Let me reiterate the language that I'll be using during the lecture. During the whole of lecture 6, search techniques and in particular the adversarial search techniques, I'll be using English with sporadic use of Urdu here and there. At the end of the lecture, I'll be giving a summary in English, which will then be followed by a keynote or key points in the lecture that will be in Urdu. So for those of you who want to understand this in Urdu, I really recommend that you listen to the lecture first, try and understand it, and then after that you can move to the end of the lecture where all the key points are going to be present in Urdu for you guys to understand it easily. So let us start with looking at the contents of lecture 6, adversarial search, which is part of the course CS352 Introduction to Soft Computing. First of all, in section 1, we'll be looking at the topic searching in games, which is basically about introduction and background to games and how we look at games from the perspective of AI. Then we'll look at a specific algorithm called Minimax Algorithm, which is used to find the optimum value when two players are playing a game. Then in section 6.3 we'll talk about alpha beta pruning, which is a specific technique to improve the complexity of Minimax algorithm and is used in conjunction with Minimax algorithm. Finally, in section 6.4 we'll look at a very interesting topic, which is the current state of games when a man plays versus a machine. So here in this section we'll basically be looking at how machines have improved or evolved over time and how they are now leading man in terms of at least gameplay. And we'll also see different techniques that have been applied in machine learning and in AI for this purpose. Welcome to the lecture on section 6.3 alpha beta pruning, which is part of the lecture series of lecture 6 adversarial search algorithms, which is in turn part of the course of CS352 Introduction to Soft Computing. In this section we'll be talking about alpha beta pruning and the various nitty-gritty details of alpha beta pruning. Remember that in the earlier section we had talked about Minimax algorithm and we had basically seen examples of Minimax algorithm. I had finished the previous lecture on the note that the Minimax algorithm, while complete and optimal, cannot be applied to real-time games because the issue is the complexity of or the number of computations that typical Minimax algorithm needs to run for a game tree. So while games that are very simple, for example tic-tac-toe, can be easily run and computed by the Minimax algorithm, I think the main problem is with games of high complexity, that is chess and go. So in this section we'll look at a technique to improve the runtime of our algorithm. Let us have a quick look at what is the agenda of this section, section 6.3. We will be basically talking about alpha beta pruning. Then we'll talk about the main condition that is required for alpha beta pruning to work, and basically this is the break condition beyond which we'll basically prune away the rest of the tree. Then we'll discuss the key points for alpha beta pruning. This will be followed by a pseudocode for alpha beta pruning, where
I'll kind of run through the pseudocode for alpha beta pruning. Then I'll show a worked example of alpha beta pruning where I'll just pick up a gene tree and I'll come up with how we can when is pruning going to be applied and how the pruning is going to be applied. And then finally I'll talk a bit about the move ordering of alpha beta pruning and how the order of the solution actually affects the number of computations required for Minimax algorithm using alpha beta pruning. So that's the overall agenda of this particular section. So let us start with what is alpha beta pruning. Alpha beta pruning is a modified version of the Minimax algorithm. It is an optimization technique for the Minimax algorithm. As we have seen in the Minimax search algorithm, that the number of game states it has to examine are exponential in depth of the tree. That is, the time complexity was big O of b to the power m, where b was the branching factor and m was the depth of the tree that needs to be explored. So the Minimax search algorithm had a time complexity of big O of b to the power m, or exponential time complexity. Here what we need to understand is that alpha beta pruning actually cuts the number of nodes explored to half. Since it is cutting it by constant factor, so the overall complexity remains the same, but the number of nodes that will be explored would be significantly less. Hence, we cannot eliminate the exponent and reduce the time complexity, but we can basically reduce the number of nodes that need to be explored. And that is also very helpful when you consider the time to compute results. Hence, alpha beta pruning is a technique by which, without checking each node of the game tree, we can actually compute the correct minimax decision, and this technique is called pruning. With pruning, we have a specific technique where we are basically working with two threshold parameters called alpha and beta, and the pruning involves these two threshold parameters for future expansion. So the technique that we are going to study in this course, and at least in the following lecture, it would be called alpha beta pruning. People also call it as alpha beta algorithm, but I think alpha beta pruning is the word that I'll be using throughout the lecture at least. Alpha beta pruning can be applied at any depth of a tree, and sometimes it not only prunes the tree leaves but also entire subtrees. The two parameters alpha and beta can be defined as: alpha is basically the best or the highest value choice we have found so far at any point along the path of maximizer. The initial value of alpha will always be set as -infinity or the largest value in negative. Beta, on the other hand, is the best or the lowest value choice we have found so far at any point along the path of minimizer. So this is a choice for minimizer, and for minimizer the best value is the lowest value, and we always initialize beta with the highest possible positive value or positive infinity. The alpha beta pruning to a standard Minimax algorithm returns the same moves as the standard algorithm does, but it removes all the nodes which are not really affecting the final decision but making algorithm slow. Hence, by pruning these nodes, it makes the algorithm run fast or relatively faster than the original Minimax algorithm. Hence, this is just a technique where the results are always the same. So if you use alpha beta pruning or you do not use alpha beta pruning with Minimax, the results will always be same for both the cases. The only difference is that with alpha beta pruning, you might remove away nodes that are not so relevant, and in that case alpha beta pruning will run much faster than the simple Minimax algorithm. So I've already introduced the two variables alpha and beta. One is for basically maximizer and the other is for minimizer, and alpha beta pruning basically runs on the phenomena that as long as alpha is greater than or equal to beta, it will continue to run,
as soon as alpha gets less than beta, we cannot apply alpha beta pruning. So one needs to keep in mind that both the variables must hold this condition, and alpha must be greater than or equal to beta in all cases. So what are the key points for alpha beta pruning? First, the max player will only update the value of alpha. It cannot touch the value of beta at all. Second, the min player will only update the value of beta. It cannot touch the value of or update the value of alpha at all. So both players can only update their only specific variables. Then point 3, while backtracking the tree, the node values will be passed to upper nodes instead of values of alpha and beta. Okay, so the value that we pass to upper nodes will always be the actual value of the node, right? It won't be the value of alpha or beta or whatever is coming in. Okay, so we'll only pass the alpha and beta values to the child nodes. So the child nodes will have the alpha and beta values, and the value of each node will then be passed up the tree while backtracking, and instead of the values of alpha and beta, we'll only pass the actual node values. So while we discuss the main theory behind alpha beta pruning, here is the pseudocode for alpha beta pruning. Notice that this algorithm is very similar to the algorithm for Minimax, and there is only two additions in here. One is the alpha variable and its corresponding code, and then there's a beta variable with the corresponding code. And what you need to note here is that now if you compare both pseudocodes side by side, it's not done here, but if you compare it, you'll notice that the code is almost identical except for maybe an if condition in both the for loops. So if beta is less than equal to alpha, we just break and return, and so there's a separate break condition which is conditional on the value of beta and alpha. And what we are doing here is that at each level the alpha and beta values are continuously updated. So what you see is for maximizing player or max, the only value that gets updated is alpha. So it is going to update the alpha, basically using alpha and max EVA, and basically then compared if beta is less than equal to alpha, then it is going to break. Similarly, on the other hand, if it is min who is playing, then for min we are going to check for beta, and if the resultant beta is less than or equal to alpha, we are going to break and return the minimum evaluated value as a node value. So that's the overall algorithm in English. But like always, whenever I tell algorithm, I'll also do it in Urdu. So here's the Urdu part. इस स्लाइड में हम देख रहे हैं बेसिकली स्यूडो कोड फॉर अल्फा बीटा प्रूनिंग, और ये जो स्यूडो कोड है आप इसको उठा के कंपेयर करो जो आपने मिनीमैक्स के साथ किया था, और मिनीमैक्स में आपको जो बेसिक डिफरेंसेस नजर आएंगे, सबसे पहला डिफरेंस, सबसे मेजर डिफरेंस जो है वो ये है कि मिनीमैक्स में 3 आर्ग्यूमेंट्स हैं एज इनपुट, इसमें 5 हैं. डिफरेंस क्या है? अल्फ़ा और बीटा के 2 वेरिएबल्स और इसको पास हो रहे हैं, ठीक है. और ये बेसिकली जब आप मिनीमैक्स रूट नोड से स्टार्ट कर रहे हो तो रूट नोड पे ऑल इट इज़ गोइंग टू डू इज़ इट इज़ गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम रूट नोड, ठीक है, गो डाउन बेसिकली हर चाइल्ड पे वो फर्दर आपसे वैल्यू मांगता जाएगा, ठीक है. मिनीमैक्स की इवैल्यूएशन पहले लेगा और अनटिल इट बेसिकली गेट्स अ वैल्यू. उसके बाद जब आपका वैल्यू आ गई मैक्स ईवा की, तो फिर इसने अल्फ़ा को और मैक्स ईवा को कंपेयर करना है. अगर मैक्सिमाइज़र की हम बात करें तो मैक्सिमाइज़र के लिए हमेशा अल्फ़ा और मैक्स ईवा कंपेयर होगा, मिनिमाइज़र के लिए हमेशा मिन ईवा और बीटा कंपेयर होगा. अब आ जाते हैं अगले सवाल पे कि बेसिकली इसका जो है वो रिज़ल्ट क्या आएगा, ठीक है, इस एल्गोरिथम का. सो बेसिकली इसकी रन में देखें इसमें और जो आपने पहले पढ़ा था मिनी मैक्स में, उसमें सिर्फ एक और मेजर फ़र्क है, वो ये है कि इसमें एक इफ़ कंडीशन लगी हुई है, एक अल्फ़ा की कंप्यूटेशन लगी हुई है, इसमें कि वैल्यू जो है वो निकल आती है, ठीक. इसी तरह मैक्सिमाइज़र की हमने बात की, अब इसी तरह बात कर लेते हैं मिनिमाइज़र की. तो मिनिमाइज़र में भी वही एक
बीटा की कंडीशन है और मिन ईवा की कंडीशन है, ठीक है, वो आपको बीटा कंप्यूट कर रहा है और बीटा को चेक कर रहा है अल्फ़ा से कम है या बराबर है, तो उस पर उसको ब्रेक कर दे, यानी बीटा जब तक छोटा हो या बराबर हो अल्फ़ा से तब तक ये एल्गोरिथम जो है वो नहीं चल सकता, ठीक है। जब भी बीटा बड़ा होगा तब तक ये चलता रहेगा। और मज़े की बात है कि बीटा मिन का काम है कम करना, जबकि अल्फ़ा जो है वो मैक्स का काम है बढ़ाना। So let us take an example of two-player search tree to understand the working of alpha-beta pruning. And this is where you need to realize or work very, very hard to understand what is going on. So what you see is a game tree that has got basically 7 nodes A, B, C, D, E and F and G. And you basically start at the top with the player max. Then for B and C, min is going to choose the values, and then max is going to choose the values for D, E, F and G. The terminal nodes or the leaf nodes at the end have a utility value given, which is 2, 3, 5, 9, 0, 1 and 7 and 5. So at the very first step, the max player will start first move from node A, where alpha is basically minus infinity and beta is, you initialize it with positive infinity. These values of alpha and beta are passed down to node B, where again alpha will be set as minus infinity and beta will be set to positive infinity. And node B at the same time will pass the same values to its child D. And that is where we'll then have the utility values that are given. Okay, so then the next step is going to be, now we are at node D and the value of alpha is already given and beta is already given, but now at node D we can actually get to the it is a turn of max, and max can actually get the leaf values, which is basically 2 and 3. So what max is going to do is that it's a turn of max, and now the max can only evaluate the value alpha. You need to keep that in mind. Max can only change the value of alpha. So the value of alpha, which is currently minus infinity, will be compared with firstly 2. Okay, so which is the higher value between 2 and minus infinity? The answer is of course 2. So max is going to select 2 initially. Okay. Then it will look at the next node, which has the value of 3. Since 3 is larger than 2, so it will select the value 3 from both the children, and therefore the value at value of alpha at node D will be 3, but the value of beta is still infinity, as max cannot touch the value of beta, right? Okay. Then the algorithm backtracks to the node B, where it's going to basically update. If you think about it, at node B, it's a turn of min, and min will basically compare the value 3 with positive infinity and choose the one which is smaller. Of course, 3 is smaller, so 3 is going to choose the value of beta also as 3, right? So this ends the second step. First, in this step, what we have done is max chooses an alpha basically by looking at both the values 2 and 3. Similarly, beta does it. Similarly, min does it for beta, and it also chooses a value of positive 3 for beta. So in the next step, algorithm traverses the next successor of node B, which is node E, and the values of alpha is equal to minus infinity and beta is equal to 3 will also be passed to node E. Then in this step at node E, max will take its turn. Since it's max turn, so max will take its turn, and the value of alpha will change. Since it can only work with the value of alpha, so it might change its value. The current value of alpha, which is basically minus infinity, right, will be compared with 5. So max of minus infinity and 5 is 5, right? Hence at node E,
alpha is equal to 5 and beta is equal to 3, where alpha is still greater than or equal to beta, so the right successor of E will be pruned and algorithm will not traverse it, and the value at node E will be 5. Okay, so I'll take a bit of liberty here and also explain it in Urdu. For those guys who want to learn it in Urdu, I'll do it in Urdu. अल्फ़ा बीटा प्रूनिंग के अंदर आपने सिंपली ये करना है कि अल्फ़ा और बीटा की वैल्यूज़ को कंप्यूट करते जाना है, ठीक है। और देयर कम्स अ टाइम जब आपको पता है कि नेक्स्ट को प्रून करने का फ़ायदा नहीं है, ठीक है, तो उसको जो नेक्स्ट को यूज़ करने का फ़ायदा नहीं है, सो यू सिंपली प्रून देम आउट, ठीक है। सो लेट्स टॉक अबाउट इट कि ये कैसे होगा, ठीक है। तो इसको करने का तरीक़ाकार ये होगा कि इफ़ यू लुक एट द वैल्यूज़, हम ऐसा करते हैं कि इसको एक ड्राई रन करते हैं। लेट्स से कि डी पे आपने वैल्यू 3 चूज़ की थी और बी पे आपने अल्फ़ा की वैल्यू जो थी वो -∞ थी, बीटा की वैल्यू +3 थी, ठीक है, जो चूज़ हुई थी पिछले स्टेप में। अब वो वैल्यूज़ -∞ और 3 जो है वो ई को पास हो रही हैं। सो ई एट ई द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा इज़ -∞ एंड द वैल्यू ऑफ बीटा इज़ +3, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, एंड द नेक्स्ट स्टेप एट ई यू हैव गॉट द चॉइस, आपने ज़ाहिर नोट चूज़ करना है, तो आपके पास चॉइस है कि आपने 5 को कंपेयर किया विद क्योंकि मैक्स की बारी है तो 5 कंपेयर हो रहा है -∞ अल्फ़ा की वैल्यू के साथ, एंड सिंस 5 इज़ लार्जर देन -∞, सो अल्फ़ा की वैल्यू +5 और बीटा की वैल्यू 3 हो जाएगी। एंड इफ़ यू रिमेंबर, आप हमारी जो बेसिक कंडीशन थी वो ये थी कि अल्फ़ा हमेशा या छोटा होगा या बराबर होगा बीटा से, और अगर ऐसा ना हुआ तो अगर बेसिकली ऐसा ना हुआ तो हम उसको प्रून आउट कर देंगे, ठीक है। तो सिंपल सी बात ये है कि जब बेसिकली यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अल्फ़ा की वैल्यू 5 हो गई है, बीटा की वैल्यू 3 हो गई है, तो ऑटोमेटिकली बाकी ट्री को जो बेसिकली 9 की वैल्यू है उसको चेक भी नहीं करेगा, उसको प्रून आउट कर देगा। 9 हो सकता है एक लीव हो सकता है एक पूरा सब ट्री हो, बहरहाल पूरे का पूरा वो प्रून हो जाएगा। तो लॉजिकली देखा जाए तो इसकी बेसिक वजह ये है कि यू शुड थिंक एट द पॉइंट कि हम बेसिकली मिन के परस्पेक्टिव से सोच रहे हैं, ठीक है। मिन ने चूज़ करना है, उसके पास बेसिकली 3 और 5 में अगर कोई भी चॉइस आती है तो वो हमेशा 3 को चूज़ करेगा, क्योंकि मिन ने मिनिमाइज़ करना है। तो अगर आपके पास ई जो है वो 5 या 5 से बड़ी कोई भी वैल्यू चूज़ करता है, ठीक है, क्योंकि ये मैक्स चूज़ कर रहा है ना, मैक्स ने 5 या 5 से बड़ी वैल्यू चूज़ करनी है, ठीक है। लेट्स सपोज कि 5 के बाद जो है वो 9 इस केस में था, अगर मैक्स 9 चूज़ कर भी लेता तो नेक्स्ट स्टेप में मिन ने बहरहाल 3 ही चूज़ करना था, 5 हो या 9 हो, मिन उन दोनों को घास नहीं डालता, ठीक है। अलबत्ता अगर अगली वैल्यू यहाँ पे जो ई चूज़ कर रहा है, मैक्स चूज़ कर रहा है, वो 5 से छोटी है, लेट्स सपोज कि वो 1 है, ठीक है, तो तब भी मैक्स, क्योंकि मैक्स चूज़ कर रहा है तो मैक्स तो हमेशा 5 ही चूज़ करेगा, ठीक है, 1 तो चूज़ करेगा नहीं। तो अगर 5 करेगा तब भी मिन का डिसीजन जो है वो 3 ही होगा, यानी बी पे वैल्यू 3 ही आएगी, ठीक है। आप रन करके देख लें। तो इसका मतलब ये है कि स्मार्ट केस ये है कि जो ही आपको अल्फ़ा की वैल्यू ग्रेटर देन बीटा मिलेगी जिस भी जगह पे, आप उसी जगह पे उसको बाकी सब ट्री को प्रून कर देंगे, दैट इज़ इन केस ऑफ अल्फ़ा। इसी तरह इस स्टेप पे बीटा पे आ जाए, अगर मिन के मूव पे आ जाए तो मिन भी इसी तरह आपको बी और सी की वैल्यूज़ कंप्यूट करके देगा, ठीक है। और जब वो सी की वैल्यू कंप्यूट कर रहा होगा, ऑल इट हैज़ टू डू इज़ मेक श्योर कि अल्फ़ा हमेशा जो है वो बीटा से छोटा या बीटा के बराबर रहे। जो ही ये कंडीशन वायलेट होगी, आपने बाकी सारे नोड्स को चेक नहीं करना, उनको प्रून आउट कर देना है, ठीक है। यानी इफ़ कंडीशन में अगर आप देखें तो इफ़ हम ब्रेक करके बाकी को चेक भी नहीं कर रहे थे, जो फॉर लूप था जिसमें सारे चिल्ड्रन को चेक कर रहे हैं, अब बाकी चिल्ड्रन को चेक नहीं करेंगे। तो ये सिंपल सा एल्गोरिथम है, इट्स जस्ट कि इसको एक दफ़ा खुद रन करके देखें, ठीक है। माई रिकमेंडेशन इज़ दैट यू शुड रन इट on your own as well. You should not use alpha beta pruning in one run, and you should use alpha beta pruning in the other run. And with that, you will notice that the answer does not matter, because in this, at least in this scenario where you're comparing, you're trying to compute the value for b, and you have basically pruned out the value 9. If you choose 9, since it's max turn, of course the value here would be at e would be 9. But then at b it will still always be 3, because min is going to choose a minimum of 3 and 9, which is going to be 3. On the other hand, if max prunes away the value 9 and uses the value 5 only, even in that case, since 5 is greater than 3, so min is not going to choose 5 at all, it's going to choose 3, and the end result would remain 3 at b.
The main thing is, with alpha beta pruning, the value of individual nodes might change at some places. You need to remember this thing. But the end result of the root node, the value at A will always be same, regardless of however many branches you have pruned or not, or even if you have used alpha beta pruning algorithm or not. That's the main advantage with alpha beta pruning. Okay, then continuing on with the next step, the algorithm again backtracks the tree from node B to node A. At node A, the value of alpha will be changed from the maximum available value is 3, of course, since if we compare and find the maximum of minus infinity, since it is max turn, so you need to compare for alpha. Alpha is minus infinity, and the value at B is 3. So it will compare minus infinity and 3, and the value that it updates is alpha, which now becomes 3. So alpha is 3 and beta is still infinity. And the value of alpha and beta will now be passed to the right successor of A, which is node C. So at this point, at node C, the value of alpha is 3 and the value of beta is positive infinity. And the same values will then be passed onto node F. At node F, again, the value, since it's max turn, and you need to realize that max is going to choose is going to get or inherit the values alpha is equal to 3 and beta is equal to positive infinity. And with that, since it's max turn, max needs to compare the values of that are given underneath with alpha only. So max is going to start off with 0 and compare 0 and the value of alpha, which is 3, 0 and 3, and choose the maximum value, which is 3. So alpha remains 3 after this point. Then it will go to the other child, whose value is 1, and compare that to, and alpha, as you can note here, at each point we are checking if alpha is less than beta, which is not the case yet. Beta is infinity, so alpha will never be this. We will compare both values and get the values, which is basically 1, and max of 3 and 1 is basically 3. So alpha still remains 3, and the value of node F will be 1. And you need to realize that value of node F is 1 because the biggest value among 0 and 1 is 1. अच्छा, एक कॉमन कन्फ्यूजन है जिसमें मैं आपको रेकमेंड ये करूँगा कि आप कंफ्यूज ना हो उस पर, वो ये है कि जब आपने नोड F को अपडेट किया, ठीक है, यू कैन नोटिस कि उसमें अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू आप अपडेट कर रहे हो, उस नोड की अपनी वैल्यू भी अपडेट कर रहे हो, लेकिन नोड की वैल्यू जो है डेट हैज़ टू बी वन ऑफ द वैल्यूज डेट आर गिवन बिलो इट. ठीक है, F की वैल्यू या 0 हो सकती है या 1 हो सकती है. ठीक है, E की वैल्यू जो है 5 हो सकती है, 9 हो सकती है. रिगार्डलेस ऑफ अल्फ़ा बीटा की वैल्यूज़ क्या हैं, आपकी ये वैल्यूज़ जो हैं वो गिवन चिल्ड्रन में से ही आएंगी. The only places where alpha and beta are used, and you need to remember this point, is where pruning is required, whether we need to check the next child or not. ये decision जो है ये alpha beta pruning की alpha beta की वैल्यू से डिसाइड होगा. अल्फा और बीटा के जो पैरामीटर्स हैं वो सिर्फ ये डिसाइड कर रहे हैं कि शुड वी गो फॉर द नेक्स्ट चाइल्ड और शुड वी क्विट राइट अवे, शुड वी जस्ट गेट द वैल्यू, जो भी वैल्यू उसको ऊपर भेजें और मूव अहेड करें. ठीक है, इस पर कंफ्यूज नहीं होना कि F की वैल्यू जो है वो 1 आई है, जबकि आपने बीटा और अल्फा उसमें जब कंपेयर कर रहे थे आप अल्फा और बीटा को, उसमें आपने 0 1 को इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी या लेट से 3 के साथ कंपेयर किया मैक्स की बारी में. तो 3 के साथ कंपेयर किया आपने 0 और 1 को, उसमें वो बड़ा था तो आपने बेसिक अल्फा की वैल्यू को चेंज नहीं किया. ठीक है, जबकि आपने जो है वो 0 और 1 में जो बड़ी वैल्यू थी उसको F को असाइन कर दिया. तो मेन चीज़ याद रखने वाली ये है कि अल्फ़ा और बीटा के पैरामीटर्स सिर्फ और सिर्फ प्रूनिंग के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं. एक्चुअल नोड वैल्यूज़ अल्फ़ा बीटा पैरामीटर से नहीं आती, वो चिल्ड्रन में से कोई एक वैल्यू सेलेक्ट होकर ऊपर आएगी. ठीक है, ये बस क्लियरिफाई रखें अपने जहन में. ओके देन, कंटिन्यूइंग ऑन, द नोड F विल नाउ रिटर्न द वैल्यू और नोट द नोड वैल्यू 1 टू नोड C, वेयर एट C अल्फ़ा इज 3 and beta is positive infinity. Here, since node C is working with min, so only the beta of value, the value of beta will be changed. It will compare with 1
which is basically minimum of infinity and 1, and it will update the beta value to 1. Now if you compare beta with alpha at C, the alpha value is 3, okay, the beta value is 1, and now alpha is greater than beta, which is basically or break condition. It's satisfying the break condition. So the next child, which is child G, will not be checked at all, it will be pruned, and the algorithm will not compute the entire subtree of G. So the values 7, 5, etc. will not be computed at all, and instead the value 1 will be given to C. Think of it logically. If the value was of G was greater than 1, let's suppose 7 or 5, min would have chosen 1 anyway, right? So it wouldn't have mattered. But let's say that if the value was less than 1, let us say it is minus 1 or 0 for G, right? Then in that case, automatically min would have chosen it, right, fine. But for A has already made the choice of selecting 3. Once you see 1 at F, right, and maybe consequently at C, automatically the choice for A would be to go for the B value, which is positive 3. So A, since it's maximized, it is going to choose 3. If you go less than 1, it's not going to choose those values. If G was higher than 1, then in any case min would not have chosen it anyway. So it was useless to explore the subtree G, and this is what the alpha beta pruning is telling us as well. C now returns the value of 1 to A. Here the best value for A is maximum of 3 and 1, which is basically 3. So A is assigned a value of 3. Shown here is the final game tree, which is then showing the nodes which are computed and nodes which has never been computed. So what you can see here is that the optimal value for the maximizer is 3 for this example. You can try running it with or without computation, with and without pruning, and you will notice that it will still give you the value 3 for A. But keep in mind, if there was no pruning, we might have selected a different value for C, we might have selected a different value for G, or actually we would have selected a different value for G, and we might have selected a different value for E. It's not necessary that by pruning you're going to get the same values back for all nodes, but yes, it does guarantee that you will get the same value for the root node, for the node for which you are asking the question. The value will not be changed, although for intermediate nodes, for internal nodes, the value might change. Again, it's not necessary, but it might change. But what you have done is, by running this, you have actually saved a lot of computation by not computing at least values for 4 different nodes. So while we were discussing the alpha beta pruning, you must have noticed that the move ordering of alpha beta pruning is extremely important, and the effectiveness of alpha beta pruning is highly dependent on the order in which each node is examined. The move order is an important aspect of alpha beta pruning. The move order can be of 2 types essentially. One is called the worst ordering and the other is called the ideal ordering. In the worst ordering, in some cases, alpha beta pruning algorithm does not prune any of the leaves of the tree and works exactly as a minimax algorithm. In this case, it also consumes more time because of alpha beta factors. Such a move of pruning is called worst ordering. In this case, the best move occurs on the right side of the tree. The time complexity for such an order is big O of b to the power n, which is essentially the same as that of minimax algorithm. So there's not much of a difference in terms of time complexity, at least, because the order remains the same.
Then the other type of ordering is called ideal ordering, where the ideal ordering for alpha beta pruning occurs when lots of pruning happens in the tree and best moves occur at the left side of the tree. We apply depth first search, hence it first searches left of the tree and go deep twice as Minimax algorithm in the same amount of time. It will basically go double in double depth actually. So the complexity in ideal ordering is basically cut by half, which is big of b m by raised to power m by 2. If you go to the time complexity, it is still, you can notice that it is still, even if it is ideal ordering or even if it is worst ordering, it is still big O of b to the power m. Hence the complexity will not change, but yes, the number of computations might be decreased significantly by the order of 2 at least. So what are the rules for finding good ordering? Here are some of the rules with which we can find good ordering in alpha beta pruning. First, the best move should occur from the shallowest node. Second, order the nodes in the tree such that the best nodes are checked first. Third, we should use the domain knowledge while finding the best move. For example, for chess, try the order that we must capture first, then we should threat maybe the pieces or the king, then we should try the forward moves, and lastly we should use the backward moves. We can also bookkeep the states, as there is a possibility that states may be repeated, so we'll have the best move saved with us, and this is going to save us a lot of time. So at the end of the section, let's do a quick summary of what we have seen so far in alpha beta pruning. First of all, Minimax algorithm, while complete and optimal, has too high a time complexity to be of use in real-time applications. With the addition of pruning, the Minimax algorithm might have lesser number of computations, and the number of computations might decrease by a factor of b square, where b is the branching factor. Alpha beta pruning retains the completeness and optimality of the Minimax algorithm, but at the same time it cuts the runtime in the best case by half. Alpha beta pruning algorithm may decrease the number of computations, but note that the time complexity of the algorithm will not change. It will remain to be big O of b to the power m. The algorithm is just a modification of Minimax. It introduces two variables alpha and beta, one of which can be optimized by either minimizer, in the case of minimizer it's beta, and in the case of maximizer it is alpha, and where pruning occurs whenever alpha becomes larger than beta. So we need to stop and we need to prune the values at that point and not check the rest of the children at all. The effectiveness of alpha beta pruning is highly dependent on the order in which each node is examined. So the ordering of the children matters. The move ordering is of course of two types. One is the worst ordering, where the best move occurs to the right side of the tree, and the other is the best ordering, where the best moves occur to the left side of the tree. And with that we have come to an end for alpha beta pruning section 6.3. Now you can go on to the recommended readings and see what we have left over, what we have more to learn from those as well. You can see more examples in this particular scenario. I think if you go to the YouTube videos, you'll find more examples where you can see how it is done in real time and with real examples. Also, you can see that how the values are computed from let's say a game of chess or tic-tac-toe etc. जल्दी से समराइज करते हैं जो हमने इस पूरे सेक्शन में देखा. सबसे पहले तो ये कि मिनीमैक्स एल्गोरिथम जो है वो बेशक कंप्लीट है और बेशक जो है वो ऑप्टिमल है, लेकिन इसके बावजूद उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा है
और रियल लाइफ एप्लीकेशंस में यानी कि रन टाइम के ऊपर आप उस मिनीमैक्स एल्गोरिथम को एज इट इज़ यूज़ नहीं कर पाते। और उसकी सबसे बड़ी वजह, मेजर वजह ये है कि आपको फ़ौरन से फैसला चाहिए। और अगर जो कॉम्प्लेक्स गेम्स हैं स्पेशली जिनमें के जिनकी डेप्थ बहुत ज़्यादा है, जिनके नोड्स बहुत ज़्यादा हैं, उनके अंदर ये कोई बहुत अच्छा नतीजा नहीं निकाल सके। कम से कम वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स या प्रोफेशनल प्लेयर्स के ख़िलाफ़ ये इसके स्टैंड करने के चांस काफ़ी कम हो जाते हैं। प्रूनिंग के इजाफे से कम जो है वो एल्गोरिथम की जो नंबर ऑफ कंप्यूटेशंस हैं उनको हम बहुत हद तक कम कर सकते हैं, बहुत इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। उनको बेसिकली हम सिंपल वर्ड्स में b स्क्वेयर्स की फैक्टर से हम उसको कम कर सकते हैं। ठीक है, जो पहले अगर आपको याद हो, जो नंबर ऑफ कंप्यूटेशन लेट से अगर b⁻m थे, तो इस अल्फ़ा बीटा प्रूनिंग के साथ बेस्ट केस में जो है वो b⁻m/2 हो जाएंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ कंप्यूटेशन जो है वो सिग्निफिकेंटली कम हो रही हैं। अलबत्ता इससे आपको एक और चीज़ का आइडिया होगा कि जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है उस पर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, रन टाइम आपने कम कर दी एक कांस्टेंट फैक्टर से। जब कांस्टेंट फैक्टर से रन टाइम कम होता है तो उससे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर बहरहाल कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पर फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन नंबर ऑफ स्टेप्स बेस्ट केस में कम से कम हो रहे हैं। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अल्फ़ा बीटा प्रूनिंग के साथ जो है वो वही रिज़ल्ट आएगा जो कि आपका मिनीमैक्स एल्गोरिथम के साथ आता है। ठीक है, जिस नोड के लिए आप कंप्यूट कर रहे हैं, लेकिन जो इंटरमीडिएट नोड्स हैं उनके रिज़ल्ट डेफिनेटली बदल जाएंगे। ठीक है, तो जो इंटरमीडिएट नोड्स हैं उनमें आपको मुख्तलिफ रिजल्ट्स नज़र आ रहे होंगे। अल्फ़ा बीटा प्रूनिंग जो है वो अगर क्योंकि रिजल्ट वही ला रहा है तो इसका मतलब ये है कि बेसिकली जिस तरह के मिनीमैक्स एल्गोरिथम का उसी तरह कंप्लीट भी है और ऑप्टिमल भी है, लेकिन रन टाइम इसका कम हो गया है बाय फैक्टर ऑफ हाफ। एल्गोरिथम जो है वो बड़ा सिंपल सा है। अगर हम एल्गोरिथम की बात करें उसमें मिनीमैक्स में फ़र्क है। मिनीमैक्स की मॉडिफाइड फॉर्म है। ठीक है, इसमें दो वेरिएबल्स और इंट्रोड्यूस करवा दी गई हैं, अल्फ़ा और बीटा के नाम से। बीटा को ऑप्टिमाइज़ कर रहा है मिनिमाइज़र, अल्फ़ा को ऑप्टिमाइज़ कर रहा है मैक्सिमाइज़र। और प्रूनिंग तब होगी जब भी अल्फ़ा जो है वो बीटा से बड़ा हो जाएगा। और अगर हम बात करें कि अल्फ़ा बीटा प्रूनिंग में कॉम्प्लेक्सिटी में कितना फ़र्क आएगा, मैंने कहा आपको एक टर्म यूज़ की बेस्ट केस। ठीक है, तो हमें बेस्ट केस और वर्स्ट केस दोनों देखने पड़ेंगे। बेस्ट केस वो है कि बेसिकली जब आपके चिल्ड्रन का ऑर्डर इस तरह से हो कि जो बेस्ट ट्री है वो हमेशा जो है वो आपके लेफ़्ट साइड पे अकर कर रहा हो। ठीक है, लेफ़्ट साइड ऑफ द चिल्ड्रन में हो। और वर्स्ट केस सिनारियो, वर्स्ट ऑर्डरिंग जो है वो तब होगी जब आपका जो बेस्ट केस है वो बेसिकली राइट साइड ऑफ द ट्री पे एग्जिस्ट कर रहा हो। तो वो तमाम की तमाम एक्सप्लोरेशंस करनी पड़ेंगी और उसमें फिर बेसिकली वो ऑटोमेटिकली जो है वो प्रूनिंग नहीं होगी। तो दैट्स अ हिंट फॉर यू गाइस टू रिमेंबर कि प्रूनिंग हमेशा तब होगी जब आपका ट्री के राइट साइड पे जो है वो सॉल्यूशन एग्जिस्ट ना करते हो। जो बेस्ट ट्री है राइट साइड से ना आता हो बल्कि लेफ्ट साइड से आता हो। अगर ऐसा होगा तो वो बेस्ट ऑर्डरिंग होगी, और जब बेस्ट ऑर्डरिंग होगी तो मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रूनिंग होगी। तो इसके साथ मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको लेक्चर समझ आया होगा। इसकी एग्जांपल्स स्पेसिफिकली मैं रेकमेंड करूँगा कि आप जाएं और ट्यूटोरियल्स देखें। स्पेसिफिकली यूट्यूब के ट्यूटोरियल्स जो मैंने अगले लिंक में दिए हुए हैं उनको ज़रूर जाके देखें, उसमें उन्होंने बाकायदा एग्जांपल्स दे के समझाया हुआ है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस लेक्चर के बाद अब हम फाइनली इस चैप्टर को समेटेंगे अगले सेक्शन में, जिसमें कि मैं बात करूंगा कि करंट सिचुएशन जो है, यानी कि किन किन गेम्स में हम क्या क्या कर पाए हैं यूजिंग दीज एल्गोरिथम्स, मिनीमैक्स एल्गोरिथम एंड अल्फा बीटा प्रूनिंग, और करंट स्टेट ऑफ द आर्ट जो एडवर्सरियल गेम्स के लिए इस्तेमाल हो रही है, रीइंफोर्समेंट लर्निंग, वो क्या है। ऑल्दो किसी और कोर्स का हिस्सा है और इस कोर्स में आप नहीं पढ़ेंगे, लेकिन स्टिल हम अगले लेक्चर में उसके ऊपर बात करेंगे।